सुनने वालों को सिराज ज़ैदी के बहुत बहुत आदाब, नमस्कार और गुड आफ्टरनून. प्यार भरा आदाब, प्यार भरा नमस्कार and प्यार भरा good afternoon. You're very welcome to the program. You're listening to Siraj Zaidi until 4 o'clock. And this is your own Apna Dublin radio station. Dublin Radio, broadcasting at 93.9 Dublin South FM. So what it is, it's an hour show about the community, what's happening in our world, particularly in our world of cinema. And because I relate to that, I belong to that, and therefore I am a performer, I'm an actor, and on air I do act, particularly every Thursday. So sit back, relax, and enjoy, as usual, quite a lot of things that I do here each week with my colleagues, with my, the pillar of the show are the Charmaine Colvin, who does the news every week, and of course the Sharad Awasthi from London, who does his own input. But what I do is I try to actually give it a 360-degree view of what's happening in the world. But this show is the last show of the year. So we have come a long way, all the way up to December. Started in January, 12 months passed, and we have done 52 shows each week. And now, today is the last show of the year. Next week is going to be a pre-recorded program about Christmas. But today, we're also talking about Christmas. And the big chunk of the program today will be devoted to a new release called Vanvaas that has been releasing literally tomorrow worldwide. And I'll be talking to, I met the actual director in Mumbai when I was there, Mr. Anil Sharma ji. And of course, the DOP, the director of photography of the film, is an acquaintance of mine, Kabir Lal, who kindly brought me to his office. And we end up talking and discussing a possibility of opening of the 16th Film Festival, 16th Indian Film Festival of Ireland 2025 in September with the Vanvaas. This is another commitment that I'm trying to actually live up to. But today, I'm going to devote the entire show, the big part of the show, to Vanvaas, and you will be listening to the beautiful songs of Vanvaas. And I'll tell you all a background about the film and all the rest of it. But the director also have given me the clip, which I have it, which was recently recorded. Mr. Anil Sharma, his son, who's also starring in it, 𝐬𝐻 Sharma, is also in this clip. But first thing first, without further ado, should I say, take it away. Charmaine, there you go. News is here. Weekly news roundup with Charmaine Colvin. You are listening to Apna Radio 93.9 Dublin South FM. Elon Musk has written on X this week that his Starlink satellite is inactive in India in response to authorities who have seized two of the company's devices in recent weeks, one in an armed conflict zone and another in a drug smuggling bust. Starlink is seeking approval in India to provide satellite broadband services, and the company owned by Musk is trying to address any potential security concerns as part of the process. He wrote on X earlier this week that the Starlink beams are turned off over India and were never on in the first place. Earlier this month, the Indian Army in Manipur state, where a communal conflict is raging, conducted a search operation and found a satellite dish and receiver with a Starlink logo. Military officers claimed it was being used by a militant group, who probably smuggled it through the porous border with neighbouring civil war-torn Myanmar. Early December, Indian police sent a legal demand to Starlink, seeking purchase details of a device found when they caught smugglers at sea with $4.2 billion worth of methamphetamine, one of the biggest Indian seizures to date. The police suspect the smugglers were using the internet device to navigate. An Indian woman who disappeared for 22 years and says she was trafficked to Pakistan has finally returned home after her grandson saw her in a YouTube video. Hamida Banu said she spent the last 22 years as a living corpse, trapped in a neighbouring country and unable to contact her family. Miss Banu claims to have been tricked into going to Pakistan after accepting what was supposed to be a job offer in Dubai in 2002.
India and Pakistan have conducted extensive checks on her identity before her Indian nationality was confirmed in October. Miss Banu, a widow with 4 children, was supporting them by working as a cook in Qatar, Dubai and Saudi Arabia. She was approached by an unscrupulous job agent and paid £200 only to find herself detained in a house in Pakistan for 3 months. Her story came to light when an Indian journalist happened to watch a YouTube video by Pakistani social media activist Maroof, who shared it on his platform. She is now happy to be back with her family but says she doesn't want to be a burden to anyone. Delhi's pollution has once again soared to hazardous levels, with a top expert warning that India's toxic air will have a bigger impact on public health than the COVID-19 pandemic. This week, the air quality was 35 times over the safe limits set by the World Health Organization, leaving residents complaining of breathing problems as well as itching in their eyes and throat. Authorities have urged people, especially children and the elderly, to stay indoors as much as possible, while doctors recommend wearing a mask. Frank Hammes, Global Chief Executive of air technology company 𝐈𝐭_𝐬, warns that this is just a short-term measure and much more is needed to be done. He said alarming air pollution levels are a public health pandemic, as toxic air impacts everything from mortality to IQ levels. Every winter, Delhi and nearby states face high pollution due to low wind speeds, vehicle emissions and the burning of crop remains and firewood. The Delhi government reintroduced strict pollution control measures earlier this week, less than 2 weeks after the country's top courts allowed them to be eased. In 2023, India overtook China to become the world's most populous country, according to UN estimates. Despite a population of around 1.45 billion, Indian leaders of 2 southern states have recently been advocating for more children. Andhra Pradesh and Tamil Nadu are providing incentives, citing low fertility rates and ageing population. Andhra Pradesh has even scrapped its 2-child policy for local body elections, with neighbouring states likely to follow suit. India's fertility rate has fallen substantially, from 5.7 births per woman in 1950 to the current rate of 2. Fertility rates have fallen below the replacement level of 2 births per woman in 17 of the 29 states and territories. The southern Indian states lead India's demographic transition, achieving replacement level fertility well ahead of the others. Kerala reached the milestone in 1988, Tamil Nadu in 1993, and the rest by the 2000s. Today, the 5 southern states have total fertility rates below 1.6, which means fertility rates match or are less than many European countries. This has caused concern that India's shifting demographics, with varying population shares between states, will significantly impact electoral representation and state-wise allocation of parliamentary seats and federal revenues. Experts believe the southern states are fearful of being penalised for their effective population control policies, despite being better economic performers and contributing significantly to federal revenues. Also of major concern is India's delimitation of electoral seats in 2026, the first since 1976. And finally, more bad weather in Brisbane ruined a potentially exciting finale to the 3rd test between India and Australia and left the series tied at 1-1. The 5-match series resumes with the Boxing Day test in Melbourne on the 26th of December, where an eager crowd of around 90,000 is expected for the opening day. That's all from me. Have a great Christmas and New Year if you are celebrating it, and tune in 2025 for more news updates on Apna Radio 93.9 Dublin South FM. Indeed, we shall. Thank you so much indeed, Charmaine, for lovely, huge coverage of India, from weather to the pollution, the quality of the polluted air of Delhi, to the population surge and all the crucial information about Elon Musk sending the spy satellite all the way around to through Myanmar and all the rest of it. So that is the state of affair right now in India. But I also have some information about what we call it
Obviously, this week is the last week, which is the Christmas week. Most of the schools, most of the businesses, most of the, the activities will be shutting down, perhaps on Friday. So there you go. We have a last show, as I said, the last live show, which will go today. And then tomorrow will be the winding down, and holiday starts literally from tomorrow. So there you go. As I said, this program is interesting, and I'm focusing little bit on the actual Christmas, what Christmas means actually to people in the world out there, because I, in fact, will end up talking about Christmas and the importance of Christmas actually in the global context. In the global context, what's happening, the war. By the way, talking about the war. Israel has dropped one of the deadliest bomb in Syria. A huge mushroom cloud has been observed, and the bombing is going on. I mean, what's the point? Ashar has left the country. And new people have taken over. Whether they are good, bad, or different, that doesn't matter. Who they are, everybody knows who took over the new regime in Israel. But at least let the people settle in there. What's the point of bombing now? That you are bombing with the deadliest of the deadliest weapon that you have got access to, supplied perhaps by the Americans and all the rest of it. So in the midst of the war that is happening in Syria, in Israel, and in Ukraine, 3 wars that are happening, what Christmas means to people in there and the people who are fighting, what Christmas means to them. Do they realize, do they know it's Christmas time is the song, which I don't have it, but I have other songs today. But that's a famous song of Bob Geldof, Do They Know It's Christmas Time? But this is exactly what Sharad has put together, a beautiful thing. So sit back, relax, and listen to what his school teacher has written to him and what Christmas means to the world today from her point of view, from the point of view of India. It's great to be here again. This Christmas is going to be special, and I had the privilege of speaking with my principal from primary school. With a heart full of love and care, she nurtured generations of students, teaching them the values of morality and empathy. Sister Lena, as we fondly call her, is a dedicated educator and a compassionate mentor. Even decades later, she continues to touch the lives of those she once guided, who are now on verge of becoming grandparents themselves. So this Christmas, I reach out to Sister Lena to share her thoughts on the meaning of Christmas amidst today's conflicts, intolerance, and consumerism. In response, she wrote a heartfelt letter reflecting on the historical significance of Christmas and offering timeless insights into the life and teaching of Jesus. I would have been happy if she would have come over and spoken for herself, but then I'm saving her for another day. So about Christmas, she writes that Christmas, after all, is not just a date on a calendar. It carries immense historical, spiritual, and cultural significance. A story rooted in the very foundation of faith and humanity. To grasp the depth of Christmas, she says, we must start at the beginning, the creation of the world. According to Christian belief, God created humanity and placed them in paradise, the Garden of Eden as we know, a place of perfect harmony. Yet, this peace was disrupted when humanity disobeyed God's one rule: do not eat from the forbidden tree. This single act of disobedience introduced suffering, separation from God, and broken relationship between humanity and the divine. She goes on to say that this moment, the stage was set for redemptive story. The birth of Jesus is seen as God's solution to restore the fractured bond, a divine plan set in motion over centuries. So, the God's becoming human flesh is called incarnation, a cornerstone of Christian belief. More than the historical event, the incarnation represents the ultimate expression of God's love and commitment to humanity. It sets the Christmas story apart as a moment of hope
and reconciliation. Now Jesus is born, and Jesus' birth did not occur in grandeur or splendor, but in humility. Born in the stable in Bethlehem to parents far from home, the circumstances of Jesus' arrival are significant. The humble birth challenges the conventional ideas of power and authority. Instead of a palace or born as a prince, Jesus entered the world in a place of basic necessity, identifying himself with the marginalized and the overlooked. For these people, even today, we are finding a Jesus, the marginalized, the overlooked. There are millions and billions of them on this planet right now. The message of Jesus' life reflects the significance of his humble beginnings, and there is a learning here. Born into a Roman-occupied Judea, a land rife with political tension and unrest, he taught radical concepts of love, forgiveness, and compassion. We still need lots of it today. He emphasized caring for the poor, healing the sick, and even loving one's enemies. Now, these teachings upended the dominant system of control and authority. So the entire configuration of love and forgiveness and caring for the poor is still in contest with the system of authority. But then at the time, this revolutionary message resonated deeply with the oppressed, and it threatened those in the power, ultimately leading to his crucifixion. But for Christians, Jesus' death was not the end. The resurrection, his rising from the dead after 3 days, stands at the center of the Christian faith. It symbolizes triumph over death, the promise of eternal life, and the restoration of hope. The apostles, empowered by their belief in resurrection, carried on his mission despite persecution, spreading his message to the world. As we last said in few of our episodes, the idea cannot be killed. Idea lives forever. People may come and go. It stays on. It lives forever. According to Sister Lena, today the humility of Jesus' birth stands in stark contrast to modern celebrations of Christmas, which are often marked by excesses and consumerism. So, how do we reconcile the image of a baby born in a stable with the materialism that dominates the holidays today? Of course, this contrast and the tension is also a powerful reminder of the core messages of Christmas, that is, love, compassion, and generosity. Perhaps this season offers an opportunity, a chance to pause, reflect, and reconnect with what truly matters. Christmas is more than a celebration, she goes on to say. It is a call to embody its values in our daily lives. It challenges us to extend generosity to those in need, to foster community, and to spread the light of hope and love. Importantly, the story of Jesus' humble birth reminds us all that true power lies not in wealth or status, but in humility, service, and compassion. So true, we see that all over, that those with enormous wealth always seem to be so weak, while the power of common men on the street protesting against the injustice seem to be much more powerful than those. In a world still marred by conflict, divisions, and suffering, the Christmas story resonates deeply. Surely, it is a message of light breaking through the darkness, of hope amidst despair. At its heart, the Christmas story is one of transformation. The transformation which begins with humanity's separation from God at the Garden of Eden and culminates into a divine act of love with the birth of Jesus. As we celebrate Christmas this year, let's go beyond the surface, beyond the shallow actions of consumerism and show of wealth. Let's embrace its deeper meaning, embody its value, and share its spirit with the world. So my take is, as a non-Christian, brought up in a secular, peaceful country I proudly call India,
I would like to honor the true power of Christmas. We had celebrated Christmas all our lives. So Christmas, which is a story of hope, I look forward that peace will return soon to those war-torn countries, connecting hearts of those divided by narrow thinking of caste, creed, color, and religion, and then transforming humanity separated by hostile neighbors, all culminating into a prosperous one world, one prosperous community. With that thought, and my thanks to Sister Lena, I sign off, wishing you all a Merry Christmas. See you again next week. Bye for now. Thank you so much indeed, Sharad. I loved your optimism. On the contrary to what you have just suggested, of course, everybody believes in that. Everybody with a common sense, everybody with coming from the land of peace and tranquility, multi-faith, multi-religious, and a peaceful country. We grew up, yes, indeed, we grew up with the Christian schools celebrating Christmas, and I remember doing the Christmas plays in my primary school back in India, and I used to be one of those three kings who used to bring offerings to the baby Jesus. One of the kings always I played for years and years and years. So there you go. I mean, it's an interesting way of looking the thing, and then you realize that the world now that we live in is gone absolutely wonky and crazy because. I don't know because of what. Are they not Christians? Do they not believe in? Most of them are Christians, actually. Ukrainians fighting to the the Russians fighting to Ukrainians. They are Christians, broadly speaking. Israelis are not Christians. Yes, Israelis are Jews, Zionist, and Netanyahu is not a Christian. So therefore, it stands to reason to believe that he would not respect and they would not celebrate Christmas. But then again, there are a lot of people who are sleeping. My point is that they should rise. Noises are not being building up in the peaceful quarters of the world. Japan is sleeping. China is sleeping. India is sleeping. Australia is sleeping. New Zealand is sleeping. Nobody is actually uttering a word of complaint, word of concern about the innocent life being lost. Not only innocent life has been lost, the entire country has been eliminated, eradicated. I'm talking about, of course, Palestine. Now, in the midst of all that, Jesus, who was born there in Palestine, in Bethlehem, the dark face of the saddest aspect of that is that, there is no celebration. I mean, otherwise, this would have been a biggest tourist attraction for the world to visit Bethlehem during the Christmas time. Worldwide people would travel there. And imagine how much economy would improve and all the rest of it. But that's not on their mind. So why and how humanity has descended to this low level of warmongering, should I call it? Enough is enough. Now, I'm moving towards another clip that I'm going to play. But before that, I must take an ad break. So sit back, relax, and enjoy this ad. And after that, you will be listening to and then I'll play some songs. So Be Media Smart is an ad coming up now. So I'll take a quick ad break, and then I will be talking about a movie called Vanvaas. Vanvaas is the film that has been releasing tomorrow worldwide. But sit back, relax, and enjoy this quick break, and then I'll be talking about Vanvaas. Dublin South FM. You wouldn't buy a car without knowing its history. So why would you buy a story without knowing who's telling it? Come here and I tell you. It's not always easy to verify what you see, read, or hear. But now there's help. Visit www.bemediasmart.ie. Stop, think, check. Be Media Smart. Brought to you by Media Literacy Ireland, supported by RTE. 93.9 Dublin South FM. Indeed, welcome back to the programme, 93.9 Dublin South FM. And before I'll actually give you the second clip, I would be able to play a song
from the movie called Vanvaas. And there you go. Sit back, relax, and enjoy this particular track. And then I'll be talking about all this film. In fact, the director is going to talk about it. And he's been interviewed in one of the leading newspapers in India. But before that, have a little bit of a taste of the song. तुम क्या जानो हो मेरे साजन बिरहा में होती आँखें नम हर दस्तक पे हर आहट पे लगता है कि आ गए हो तुम यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुमको ही पुकारा करती हूँ यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुम भूल भी जाओ पर मैं तो तुमको ही पुकारा करता हूँ यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ सचमुच में कितनी नादान हो तुम मुझे जान के भी तो अनजान हो तुम इश्क नहीं हो बस मेरे लिए जो मुझ में बसी है वो जान हो तुम मेरी जान हो तुम मेरी जान हो तुम ये आंखें जहाँ तक भी जाएं ये आंखें जहाँ तक भी जाएं बस तेरा नजारा करता हूँ यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ
से जुदा जिस दिन भी होते हो, मैं खुद से जुदा उस दिन हो जाती हूँ। तुम मुझसे खफा यारा जब होते हो, मैं खुद से खफा उस पल हो जाती हूँ। खो जाती हूँ, खो जाती हूँ। मुझे प्यार है तुमसे इस कारण, ओ, मुझे प्यार है तुमसे इस कारण। हर बात गवारा करती हूँ यादों के झरोखों से, अक्सर मैं तुमको निहारा करती हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। यादों के झरोखों से अक्सर मैं तुमको निहारा करता हूँ। यादों के झरोखों से मैं तुमको पुकारा करती हूँ. Beautiful song. And it's a main cast of this film. It's amazing. Excuse me. It's amazing because the lead actors are is Simran Kaur, Simran Kaur, not Simran, but is Simrat Kaur. Simrat Kaur is a Punjabi lady, born and grew up, 27-year-old young lady, Simrat Kaur, born and grew up in Mumbai, and 𝐻𝐸𝐴 Sharma. 𝐻𝐸𝐴 is a son of the director, Mr. Anil Sharma ji, and of course the giant of a giant actor, which is towering figure in the Bollywood industry, the Hindi film industry, I should say Bollywood word, Indian film industry, Hindi film industry, Marathi film industry is no other than Nana Patekar, sir. Now, Nana Patekar played the father, 𝐻𝐸𝐴 played the son, and the love affair, the love interest of 𝐻𝐸𝐴 is the lady called this Simrat Kaur. So this is it's not a typical love story, but it's a typical film of an Hindi genre. You can say that. Shot beautifully in a city called Banaras, and by a friend of mine who is the prolific DOP of Indian cinema called Kabir Lal, who shot another film, Un Parvali, and a Spanish remake film that we screened it in the last film festival. And Kabir was in the festival. He travelled on his own expenses with the producer. Poor guy landed in Cork, actually. Took a wrong flight from London, landed in Cork night before his screening. But beautiful man. Kabir is an amazing guy. When I was in Mumbai, I met him. I met his son, Shahid. And Kabir is a beautiful soul, should I say. A gentle soul, talented man who's been around in the industry for many, many years, filming films. And he's a prolific DOP. He shot beautiful Banaras. I mean, Banaras looks absolutely gorgeous in this film. That's what I can say that. So the film is about the lost relationship between father and son, and the father goes to find his son in the land of Banaras. So I'm not going to reveal the full plot because it'll spoil the possibility for you going to see the film. Yes, surely it will come on the OTT, but go and see in the cinema. It's releasing worldwide tomorrow. Beautifully made, beautifully shot, and beautifully acted. 𝐻𝐸𝐴 is an amazing up-and-coming young actor, should I say. He's done quite a few films. He did a film called Genius a few years ago, and he did the Gadar 2. That's another film that directed by his father, and he acted in that as well. So he's shown the promising sign of growth as an actor,
actor. He's still very much young actor. I would say in his late 20s, early 30s, not more than that. But he's showing all the promising sign to become a prolific actor. And that's all I can say right now. There's a long way to go. The journey of an actor is a very long journey. But here's this clip that I would like to play, and that's an interview. It's in Hindi, unfortunately, but it's an interview by the director himself with the journalist of a newspaper called Amar Ujala. Now, Amar Ujala is a beautiful newspaper of Uttar Pradesh, north of India, because the film and the story is set in Uttar Pradesh. So therefore, it makes sense for them to target the audience through this newspaper called Amar Ujala. So here's the director's talking. He's talking about the film and the rest of it. So sit back, relax, and enjoy this conversation. भी तहलका मचाती हैं, कोई उन्हें स्क्रीन का वीर कहता है तो कोई महाराजा बताता है। चलिए आज आपको उनसे मिलाते हैं जो स्क्रीन पर गदर मचाते हैं। बहुत स्वागत है आपका अनिल शर्मा जी और उत्कर्ष जी। बहुत स्वागत आपका amarujala.com पे। बस मुझे बहुत बढ़िया लगा अमर उजाला के दफ्तर में आकर। हाँ। और मैं मिला अभी राजुल से, तन्मय से। ये अमर उजाला क्या है, मतलब हमारा परिवार ही है। बिल्कुल। अब्दुल माहेश्वरी जो इसके रहे हैं, वो मेरे बचपन का दोस्त थे। पहली से लेके 12वीं क्लास तक हम लोग साथ पढ़े थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैं घर आया हूँ, अमर उजाला नहीं आया हूँ। और काश आज अतुल होता तो बहुत आनंद आता। वाकई में। और जिनकी कहानियाँ स्क्रीन पर गदर मचाती हैं, वो वनवास की बात क्यों कर रहे हैं आजकल? देखिए, वनवास की बात इसलिए कर रहे हैं कि घर घर में वनवास है। गदर 2 के बाद मैं गदर 3 शुरू करता या कोई बड़ी दूसरी एक्शन शुरू करता, मेरे लिए बड़ा आसान था। लेकिन क्या हुआ कि ज़िंदगी में मैं पिछले कई सालों से ये देख रहा था कि घर घर में वनवास हो गया। हर बुजुर्ग आदमी एक वनवासी की तरह ही रह रहा है। ऐसा नहीं कि बच्चे उससे प्यार नहीं करते, प्यार करते हैं, लेकिन बस वो उनके पास समय नहीं है। लेकिन उत्कर्ष एज एन एक्टर को लेकर मेरा सवाल इस चीज़ को लेकर है कि पापा की छाया में ही सारी फिल्में क्यों? क्या नई फिल्म नहीं मिल नहीं रही है या अभी आप एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हैं? जी, नई फिल्मों के ऑफ़र डेफिनेटली गदर 2 के बाद बहुत हैं, और बट वनवास इसलिए मैंने की क्योंकि वनवास हमने गदर 2 के रिलीज़ के पहले हमने प्रोजेक्ट ऑन कर दिया था। अच्छा। और वनवास की कहानी सुन के 1 लाइन जब मैंने सुनी तो उस टाइम तो मेरा कैरेक्टर, मुझे पता भी नहीं था मैं फ़िल्म कर रहा हूँ, बट 1 लाइन सुन के मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे ये पिक्चर करनी है क्योंकि ये पिक्चर का एक मकसद बहुत गहरा और मुझे पर्सनली लगता है कि हमारा एक जो देश है जहाँ पे हम रामायण और महाभारत के जो पारिवारिक वैल्यूज़ हैं उनको कोट करते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, उसी देश में वृद्ध लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, माँ बाप के साथ ऐसा हो रहा है। तो वो नई कहानी से, एक न्यू वे से, फिल्म के माध्यम से हमें वो वापस फीलिंग जो आपस की फीलिंग्स में वनवास आ चुका है, उसे कम करने के लिए मुझे लगा कि ये फिल्म करना पब्लिक के लिए ज़रूरी है। आपने मथुरा का जिक्र किया अनिल जी। मथुरा वृंदावन के इलाके में कई घर ऐसे हैं, वो बूढ़ी माताओं को हमने भी देखा है। क्या उसकी स्मृति कहीं थी आपकी इस कहानी को लिखते समय? वृंदावन में हज़ारों वृद्ध औरतें हैं जिनको कि वहाँ छोड़ा हुआ है उनके घर वालों ने, विधवाएं। ऐसे ही बनारस में अभी जैसे कुंभ आ रहा है, कुंभ के अंदर एक बड़ी ही, कुंभ बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन इसमें एक बड़ा दुखद चीज़ होती है जिसका बड़ा दुख होता है कि कुंभ के मेले में कई बार लोग अपने बुज़ुर्गों को, जिनकी यादें नहीं हैं या जो भूल गए हैं, उनको छोड़ देते हैं। और ये एक इसका बड़ा ही दुखद पहलू है। ये सोच के छोड़ देते हैं कि भाई चलो अब इनको स्वर्गारोहण होगा, बनारस ये जगह है जहाँ पे कि आदमी को छोड़ दो तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। ऐसा करते करते छोड़ देते। तो बनारस में आप जाओ तो ऐसे आपको हज़ारों लोग मिल जाएंगे जिनको कि उनके घर वालों ने छोड़। इसका ट्रेलर मैंने देखा, ये भी शायद आपने बनारस में ही बनाई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि गदर 2 के बाद एक परिवार के लिए पारिवारिक फिल्म बनाए, क्योंकि सारी एक्शन के माहौल में एक पारिवारिक फिल्म एक बसंत की फुहार की तरह होगी और लोगों को आनंद करेगी। और सबसे बड़ी बात है ये बनाने की मेन वजह ये थी कि ये बहुत रिक्वायरमेंट है सोसाइटी की। कहीं जो वक्त की धूल हम पर जम गई है और हम व्यस्तता की धूल में हम रम गए हैं, हम अपने बड़े बूढ़ों का केयर कर ही नहीं सकते, तो कहीं में वो धूल आपके चेहरे से हटाऊं और आईने में आप वो हकीकत, वो सच्चाई देख सकें और आप थोड़ा समय निकाल सकें
अपने बड़े बूढ़ों के लिए उनके साथ थोड़ा सा प्रेम प्यार कर सकें, उन्हें यही तो चाहिए बस। वो हम नहीं दे पाए क्योंकि आपको भी बूढ़ा होना है। तो ये जो सर्किल है, ये जो सर्किल जो टूटा है, कि पहले संयुक्त परिवार होते थे तो इसका एहसास नहीं होता, कोई ना कोई नाती पोते चाचा बहन भाई बुआ कोई ना कोई बुजुर्गों का ख्याल रख लेता था। आज वो नहीं है। ये कहानी मुझे जहाँ तक मैंने कुछ आपका के वो देखे इंटरव्यूज वगैरह जिसमें आपने कहा कि ये तो जर्नी के नाम से थी। जर्नी वनवास कैसे हो? जर्नी के नाम से थी। पहले हमने सोचा था जर्नी नाम रखेंगे, लेकिन फिर हमें लगा कि जर्नी नहीं, ये तो वनवास नाम राइट है, क्योंकि कहानी वनवास की ही बात करती है। और जर्नी तो है, जीवन की जर्नी की बात कर रहे थे हम, जीवन के सफ़र की बात कर रहे थे आप। जीवन का सफ़र वनवास ही है आज की जो आज। लेकिन नाना पाटेकर जैसे एक सशक्त लेकिन स्क्रीन पर एंग्री कैरेक्टर को इस रोल में, जिसके अंदर एक अशक्त सा पिता जिसके उसके अशक्त नहीं है साहब, मतलब से संतानों ने छोड़ दिया है, वो अशक्त नहीं है, बहुत सख्त है वो। तो आप 20 दिसंबर को जब पिक्चर रिलीज होगी तो आप देखना, तो आपको पता लगेगा। और आप ही नहीं, पूरे परिवार के साथ देखना, तो आपको समझ आएगा आप क्या फिल्म देख रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। उस बात को अभी मैं खोलना नहीं चाहता। वाकई में आप तो कहते हैं कि आपकी फिल्में जो हैं वो इमोशनल बम होती हैं, तो ये इमोशनल एटम बम है या बम है भी? ये इमोशंस का गदर है। गदर कहते हैं ना, गदर 3 क्या है? गदर 3 तो नहीं है, लेकिन इमोशंस का गदर है ये। कैसे, क्यों, थोड़ा बताइए। देखेंगे आप, जब देखेंगे तो पता लगेगा। ट्रेलर देखा आपने? ट्रेलर देखा मैंने। तो ट्रेलर में आपको इमोशन फील हुआ ना, या नहीं हुआ? हाँ वाकई में वो जो नाना पाटेकर को अभिव्यक्त किया है आपने उस उत्सव के रंग के बीच में, कि कितने हतप्रभ से वो दिख रहे हैं बनारस की गलियों के अंदर, वो अपने आप में वो बताता है उस द्वंद्व को। हाँ, तो बस तो ऐसे ही इमोशन से। लेकिन ये इमोशन, ये कड़वी दवाई मिठाई के रैपर में रैप करके दिए, फुल टू एंटरटेनमेंट के बीच में रैप करके। अच्छा, तो इसमें आपने एंटरटेनमेंट इतना, क्योंकि ये एक ऐसा परिवारों से जुड़ा हुआ लेकिन बहुत ही इंटेंस सब्जेक्ट है, तो क्या है ना, इंटेंस कितना भी हो, लेकिन अगर हम उसको एंटरटेन के रैपर में नहीं रैप करेंगे तो लोगों को मज़ा नहीं आएगा। अल्टीमेटली यूथ यंग, हम दिखा किसको रहे हैं? हम बुजुर्गों को पिक्चर दिखा रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम यंग ऑडियंस को पिक्चर दिखाना चाहते हैं कि वो देखें। ये जो जितने भी यहाँ बच्चे हैं ये सब पिक्चर देखें और एहसास करें। ये सब अपने माता पिता को प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनों को टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको एक एहसास हो कि नहीं यार, हमारी जिम्मेदारी है अपने माता पिता के लिए, जैसे माँ बाप करते हैं बच्चों के लिए। जब बच्चा छोटा हो तो उसके लिए कुछ भी कर देते हैं। आप चूंकि इसकी सब्जेक्ट पर काम करते रहे, इस तरीके के विषय पे भी आपने तो एक फैमिली के साथ भी बहुत उसको शूट किया है, देओल फैमिली के साथ में, और वो काफ़ी क्लोज फैमिली है। लेकिन क्या हुआ भारतीय सिनेमा जगत में कि जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्में थी, खानदान, बावर्ची, ऐसी जो 60-70 के दशक में, 80 के दशक में फिल्में आई, वो बनना बंद हो गई। बिल्कुल वही तो बात है। 20 वर्ष पहले बागवान बनी थी, उससे पहले तो बनती रहती थी, अब 20 साल में तो आई नहीं। तो यही तो लोगों को लगा कि एक्शन फिल्म, हॉरर फिल्म, कॉमेडी फिल्म, यही सब जोनर चल रहे हैं। तो इसीलिए तो हमने सोचा कि कुछ अलग करें। एक मिठाई खा के लोग बोर हो जाते हैं, तो अलग मिठाई परोसी जाए, और वही मिल रहा है, वही रेस्पॉन्स मिल रहा है। आप कमेंट्स देखो, सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फिल्म का, और इसीलिए हम आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल, फिल्म मतलब आप जैसे डायरेक्टर जो हैं वो समाज में जो देखते हैं उसी को स्क्रीन पर उतारने की कोशिश करते हैं। अभी मैं एक डेटा पढ़ रहा था कि भारत में और ख़ासतौर पर शहरी इलाकों के अंदर अकेले बूढ़ों की संख्या बढ़ी है, और बूढ़ों की संख्या बढ़ी है, और वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ गई है। इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पूछिए मत। इसको शूट करते समय किसी जगह पे आपको बहुत इंटेंस फील हुआ? बहुत जगह हुआ, क्योंकि क्या है, माता पिता से संबंधित फिल्म है, तो ऐसे डायलॉग आ जाते हैं पिक्चर के अंदर, कहानी में जब हम लिखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें टच करते हैं, क्योंकि आज हम सब लोग समाज का ही हिस्सा हैं, हम सब लोग के माता पिता हैं, हम सब के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं कहानी हम सब से जुड़ी है। ये कहानी घर घर की कहानी, हर घर से जुड़ी है। ये फिल्म अनिल शर्मा उत्कर्ष शर्मा के साथ शूट कर रहे हैं, जो उनका बेटा भी है। क्या पिता अपने बेटे को भी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है? मैं बेटे को कहानी कोई इस तरह से नहीं सुना रहा हूँ कि बेटा तू कहानी सुन, तू ऐसा ना करना। मुझे वो सुनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बालक मेरा ऐसा है नहीं। लेकिन फिर भी मैं सिर्फ एज एन एक्टर उसको कहानी सुनाता हूँ कि ये किरदार है, ये है, और भगवान ना करे किसी घर में भी ऐसे बेटे हों जैसे हमने इसमें रखे, लेकिन फिर भी है, क्या करें। नाना पाटेकर के साथ में, उनके साथ सेट पे हैंडल करना, मतलब
कई घटनाएं होती हैं। सबसे रोचक वाकया नाना पाटेकर के साथ, हमारी बहुत इच्छा थी कि अगर वो आते तो उनसे भी बात होती। क्या तबीयत यहाँ सर्दी में हैं, लेकिन कुर्ते पजामे में पूरा दे रहे हैं, जैकेट भी नहीं पहन रहे, अलग टाइप के बंदे हैं, थोड़ा सा जिद्दी नाना। जिद्दी भी नहीं है, लेकिन वो है अपने तरह से, लेकिन बहुत प्यारे बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं। और बहुत ही उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमको इनिशियल डेज में होती थी कि भाई 9:30 काम वो हमको टाइम देते थे, हम देते कितने बजे आओ, 9:30, तो 9:30 पहुंच जाते, एकदम तैयार व्यार होकर टोपी वोपी लगा के खड़े हो जाते थे साइड कैमरे के सामने, हम कोई दूसरा शॉट ले रहे हैं, अरे भाई उनको लगता था मेरा शॉट क्यों नहीं रेडी किया, तो वो हम मैंने कहा यार ये बड़े परेशानी में आ गए हम तो, बोलते मैं तो जा रहा हूँ, मेरा शॉट क्यों नहीं है। अरे मैंने कहा सर ऐसा नहीं होता, जो पिछला शॉट है वो तो खत्म करना पड़ेगा ना। तो हमको 2 दफे के बाद ये समझ आया कि ये पूरा सीन भर के लाते हैं अपने अंदर, जैसे ही लाते हैं उड़ेल देते हैं और 3 घंटे का सीन 1 घंटे में खत्म कर देते हैं। तो हमको एक बात समझ में आ गई कि ये एक अलग अनुभव था। दूसरे एक्टर क्या होते हैं, आते हैं वैन में बैठते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, फिर डायरेक्टर को बुलाते हैं, फिर सब समझते हैं, फिर सब भरते हैं और फिर सेट पे आते हैं। नाना सर क्या रात को, एक रात पहले डायरेक्टर के साथ बैठते हैं, पूरा सीन समझते हैं और सर्च पूरी रिहर्सल करते हैं, तो रात से ही सीन उनके दिमाग में भर जाता है। स्क्रिप्ट के दौरान भी वो काम कर रहे होते हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि नाना पाटेकर क्यों इंडस्ट्री में, आपके सामने कौन सी चॉइसेस थी? नहीं कई 5, देखिए इस नाना सर के रोल करने के लिए 4-5 एक्टर ही हो सकते हैं, जो अब मैं उनके नाम क्या लूं, प्लीज लीजिए। नहीं अब क्या फायदा नाम लेने से, 5-6 एक्टर ही है जो हो सकते हैं, ऑडियंस को भी मालूम है, सबको मालूम है कौन हो सकते हैं। लेकिन नाना पाटेकर का नाम अचानक आया मेरे सामने, मैंने किसी से बात नहीं की थी, इससे पहले ही डिस्कशन में ही नाना, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया और मैंने कहा अरे यार वो तो वनवास में है, उनको कहाँ से बुलाया जाएगा, नंबर भी नहीं है। फिर उनको नंबर ढूंढा, मुझे लगा ये बहुत बढ़िया चॉइस है, एकदम नई चॉइस है, बहुत सालों से उनको देखा ही नहीं है, ये एकदम नया रंग लगेगा और जैन जी ऑडियंस देखेगी कि नाना पाटेकर लेवल का एक्टर हमारे बीच में है। तो ये आपने जेनजी और वनवास दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक साथ किया है इसके अंदर, यानी नाना पाटेकर का जिक्र आते ही आपके मन में जो पहला शब्द आया कि वो तो वनवास में है, उनको कैसे संपर्क करूंगा, और संपर्क बिल्कुल वही आया। तो संपर्क किया, और जैन जी इसलिए कि जैन जी को ही तो पिक्चर दिखानी है, कि जैन जी के हम यही तो चाहते हैं कि जैन जी अपने माता पिता को लाए और दिखाए पिक्चर ये। लेकिन आप जैन जी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैन जी अक्सर ये कहती है कि उसे गलत समझा जाता है, या शायद वो अपनी भावनाओं को वैसे बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं जा रहा है। ये कहानी, जैसा आपके पापा ने भी कहा कि देश में बूढ़ा सबको होना है, लेकिन इस कहानी के अंदर जैन जी को हमें दिखानी है, बूढ़ों को ही नहीं दिखानी है। इसमें जैन जी उत्कर्ष ने कौन से अंश या कौन सी चीज़ें इस कहानी में जोड़ी, ये बताते हुए कि ये शायद जैन जी का पर्सपेक्टिव हो सकता है। देखिए ये फिल्म पहली बात तो कोई लेक्चर नहीं है माँ की। हाँ, मुझे जो सबसे लगा कि देखिए मेरे माँ बाप हैं, जैन जी के भी माँ बाप हैं, और हम सब अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो भावना कॉमन होती है, वो बायोलॉजिकल आपकी फीलिंग होती है पेरेंट्स के लिए। और मैं मानता हूँ कि वो जेन ज़ी भी इस इमोशन से कनेक्ट करेगा। हमने भी जब बागबान देखी थी एज अ किड, हमने जबकि ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था लाइफ में, हमें क्या पता शादी के बाद कैसे हो जाते हैं बच्चे, हमें क्या पता कि ऐसे भी हो जाते हैं लोग, बट फिर भी हम कनेक्ट किए ना, हम उनकी लव स्टोरी से भी कनेक्ट किए, हेमा जी और बच्चन जी के। अपने जो पापा की ही फिल्म है उसमें भी पारिवारिक वैल्यूज़ को बहुत गहराई से और सच्चाई से दिखाया गया है। जेन ज़ी मैं मानता हूँ उनके भी माँ बाप हैं, वो कनेक्ट करेंगे। और एक जो मैं आपको एक बताऊँ, एक न्यू प्रॉब्लम है, ये सब भी हमें समाज से ये जो धूल है वो हटानी है। आजकल कई बच्चे या जेन ज़ी हैं वो कहते हैं कि वो आप अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, जैसे ये गाली हो गई कि आप माँ बाप के साथ रहते हैं, तो इसमें तो आपका सौभाग्य है कि आप माँ बाप के साथ रह रहे हैं। आपके माँ बाप जिंदा हैं, आप उनके साथ एक एक पल गुजार सकते हैं, वो आपका सौभाग्य है, क्योंकि किसी ना किसी दिन वो चले जाएंगे। और ये जो वेस्टर्नाइजेशन थोड़ा है, हमें अपना इंडियन कल्चर भी अपहोल्ड करना होगा। ये कहीं ना कहीं एक लड़ाई है। कई बार कुछ ऐसी फिल्में होती हैं, इस समय पूरी इंडस्ट्री के सामने एक बड़ा चैलेंज चल रहा है, OTT वर्सेस थिएटर। आपकी गदर 2 ने बहुत लंबे समय बाद एक ऐसी ब्लॉकबस्टर दी। साउथ और नॉर्थ के डिवाइड में अगर देखें तो नॉर्थ में बहुत ये समय से ट्रेंड चल रहा है कि थिएटर में लोग नहीं जा रहे हैं, अब OTT प्रेफरेंस बढ़ रहा है।
इसको लेके आपकी क्या उम्मीद है? So that was an amazing conversation that was going on, and I would like to stop that conversation because it's a long conversation about it. I would rather play a song here, and that's a beautiful song, Bandhan. So sit back, relax, and enjoy this particular song. You probably would guess it, that this family is a family-oriented film. Baghban has been mentioned. Yash Chopra used to make those films. Yashji, Yashraj films, family value films, माँ बाप की values, बेटों की आपस की relationship and all the rest of it. And that type of film it is. It is a family film. It is a family-oriented film, a relationship between father and son. And that's what it is. So sit back, relax, and enjoy this song. सो जाता हूँ इसको लेकर जगता हूँ इसको लेकर जगता हूँ मेरे हाथ को थामे रखना यूं ही अपने हाथों तक तुम हो मंजिलों में तुम हो राहों तक लगा तुमसे मन यूं लगा तुमसे मन ये लगा तुमसे मन ओ पिया लगा तुमसे मन यूं लगा तुमसे मन ये लगा तुमसे मन ओ पिया लगा तुमसे ओ पिया लगा तुमसे मन ये पिया के लगा तुमसे मन ये लगा तुमसे मन ये लगा तुमसे मन हो पिया Laga Tumse Man Piya, beautiful song. And another song that I'm going to play is a beautiful song that is going to be another wonderful song from this film, Gili Machi. Sit back, relax, and enjoy this particular song. ये जुल्फों की बदली तू जिस पे बिछा दे ना मजनू मिलेगा ना रांझा मिलेगा ना मजनू मिलेगा ना रांझा मिलेगा ना वैसा जुनून ना इरादा मिलेगा फकत नाम के वास्ते है ये आशिक फकत नाम के वास्ते है ये आशिक नहीं आग इनमें नहीं आग इनमें ये है गीली माचिस नहीं आग इनमें ये है गीली माचिस 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 रस्म मोहब्बत से ना है ये वाकिफ जी रस्म मोहब्बत से ना है ये वाकिफ ये है गीली माचिस ये है गीली माचिस ये है गीली माचिस ये है गीली माचिस है मजनू भी मुझ में है राजा भी मुझ में है मजनू भी मुझ में है राजा भी मुझ में मोहब्बत कहीं उनसे ज्यादा है मुझ में ये जो भी मैं दे दूं सनम तेरी खातिर ये जो भी मैं दे दूं सनम तेरी खातिर लगी आग दिल में
लगी आग दिल में ये नहीं गीली माचिस लगी आग दिल में ये नहीं गीली माचिस नहीं गीली माचिस नहीं गीली माचिस Yeah, but nahi gili matches lagi aag dil mein. Another beautiful song. And I'm going to give you another song before I say finally goodbye from the 2024, because that's what it is. It's the last program of 2024. And so therefore, thank you very much for tuning me in. And my colleagues, Sharad Awasthi and Charmaine, for the rest of the last year. We shall be back in the new year, live in the studio at 93.9 Dublin South FM. Every Thursday from 3 to 4, I'm here with my colleagues to tell you about our culture, our shows, our films, our music, and that's all Apna Radio is all about. As it's self-explanatory, that is Apna Radio. So new exciting things are lined up for the new year, and I'll tell you all about it when I'll come back. There's going to be perhaps a new dedicated Indian music show on the horizon. That's all I can say until it becomes sealed and wrapped and all the rest of it. But filhal, for the time being, have a great Christmas if you're celebrating, as we say. Otherwise, have a great holiday, a break. If you're traveling, safe traveling. And enjoy the break. And I'll be back in the new year with a new material, new information. Sit back, relax, and enjoy this final track. Bye for now, and Merry Christmas to one and all.